Right. Yes. What is full form of sir? South Asian. Yes. Go ahead. Full form of sir. South Asian Association South Asian Association for with Republic. Regional Cooperation. In which year it came into being? 1985. And initiative in this context, first of all, taken by India in which year? 1983, right. Then in which year SAPTA is declared? SAPTA, what is full form of SAPTA again? I forgot here. South Asian Preferential Trade South Asian Preferential Preferential South Asian Preferential Same problem with me? Yes, then my best friend will teach me. What is full form of SAPTA? Go ahead. Then Hariom will teach me. South Asian Preferential Trade Agreement. South Asian Preferential Trade Agreement. Pardon? Yes. Go ahead. Go ahead. South Asian Preferential Trade Agreement. In which year it is implemented? Implement 2006. Sure. Yes. Yes, go ahead. Yes, Ronak. 1996 or 6. Yes, Pratik. 1993. Right. What is full form of SAFTA? South Asian Trade Agreement. In which year it is announced, first of all, 2004. and implemented in which year? 31 December 2015. 2006 में complete हुआ, only 2015. It was supposed to be implemented by 31st December 2015. You want to tell me this? Sure. Fully implemented 2015. Yes. And which year South Asian year for decade for poverty alleviation was declared? Poverty alleviation. 1983. Sure. 1985. Decade. I am talking about decade. 2007 to 2015. Sure. 2007. Yes, Kriti. 2006 to 2015. Right. Which decade is declared as South Asian intra-regional connectivity? Yes, PNC. 2008 to 2015. Sure. Yes, sir. Pakka. South Asian intra-regional connectivity. Are you sure? Yes, sir. 2008. Decade or Decade. yes. 2010 to 2000. Right. Which year is declared Green South Asia? Which year is declared as Green South Asia? South. Yes, sir. 2007. Are you sure? Yes, sir. And SARC year related to environment. Which year? Yes, Rehan. No, this is not fair. जो तुम्हें लिखाया गया है, देखो वहां पर है, वहां पर है, तो तुम पढ़ेगा नहीं. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, तुम रिवीजन करके नहीं आता है, तो ये गलत है. ये सब कुछ जो है कि टॉलरेबल है. दिस इज नॉट टॉलरेबल. ठीक है, नहीं समझ में आना तो मेरी समझ से कोई गलती ही नहीं है. ठीक है.
नहीं समझ में आना कोई इशू नहीं है, नहीं समझ में आया नहीं आया टीचर बताएगा, ठीक है। चुप रहना एक गुनाह है क्लास में, इसलिए, और नहीं पढ़ करके आना वो कम गुनाह है, लेकिन चुप रहना, क्वेश्चन टीचर से नहीं पूछना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। समझ में नहीं आना वो तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, किसी को सब कुछ नहीं आता है, वो पढ़ता है तब आता है, धीरे धीरे आएगा। लेकिन चुप रहना ये सॉल्यूशन नहीं है कि तुम क्लास में चुप हो जाते हो, वो सॉल्यूशन नहीं है। सार्क ईयर ऑफ इन्वायरमेंट, विच ईयर ही डिक्लेयर्ड? सार्क ईयर ऑफ इन्वायरमेंट, देखो अपने नोट्स में देखो किस ईयर में डिक्लेयर किया गया। किस ईयर को डिक्लेयर किया गया? देखो नोट्स में देखो। किस ईयर को डिक्लेयर किया है? तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए। Now today we shall discuss about failure of SARC. Right on. Objective of the SARC is very lofty and ambitious. Very lofty and ambitious. If it is realized, then the SARC will be heaven on the earth. Heaven on the earth. But its objective is not yet realized. Due to the following reasons. Due to the following reasons. Point 1. Malafide intention of all the members even before formation of the SARC because Bangladesh wanted to bargain with India through SARC on the Ganga water. Pakistan wanted to reach Kashmir issue on the SARC platform. Kashmir issue on the SARC platform. Nepal wanted to bargain. Nepal wanted to bargain with India on the trade and transit treaty. Trade and transit treaty
and Treaty of Peace, Friendship and Cooperation, write down in bracket 1950, Sri Lanka on Tamil issue, even intention of India was not good. It thought that since initiative of SAARC has been taken by a smaller country, therefore nobody will blame India that it is pursuing hegemonistic policy. I think this is the most important reason behind failure of SAARC. Say, if we study together, you all are student of Destination IS Academy. If you don't trust me, if you don't faith me, then whatever I will give you, you will always keep apprehension, doubt whether it is good or not. Then our all effort, I use the term, not my, our all effort will go in vain, right? So foundation of every relation should be based on trust, faith and confidence, right? Trust, faith and confidence. This is same is the story with SAARC, but foundation of SAARC was based on malified intention. Like in 1983, India took initiative regarding formation of SAARC. Then none of the country agreed because they thought it will be Indo-centric organization. India will dominate in the organization. So they did not want to cooperate with India. In 1985, initiative in this context was taken by Bangladesh under leadership of General Irshad. Then all the countries agreed with malified intention, like as I have dictated you. Bangladesh took initiative in this context because Bangladesh wanted to bargain with India on the Ganga water issue, Farakka barrage. Sri Lanka wanted to bargain with India on Tamil issue. And Pakistan wanted to raise the issue of Jammu and Kashmir. And Nepal wanted to bargain with India on the issue of, say, trade and transit facility, trade and Indo-Nepal Treaty of Peace, Friendship, Cooperation of 1950. So intention, and even in case of intention of India, it was also not bona fide. India thought since this initiative is taken by a small country, right? A small country, and nobody will blame India that India is pursuing the big brother's role. So intention was malified. This is the main reason that this organization failed to realize the objective. Next point. Bilateral trade amongst
the members of SAARC is merely 4 to 5% of their global trade, whereas bilateral trade amongst the members of EU is 67 to 69%, NAFTA 27%, ASEAN 29%, ASEAN 29%. Say in any relation, even if we have tense relation, if we have the mutual interest, then we try to sustain, we try to maintain the relation. For instance, India-China relation. Bilateral trade between the two countries is more than $100 billion. Employment opportunity of lakhs of people is based on this mutual trade and commerce, right? More than $100 billion. So even in case of tense relation on the issue like Galwan, Doklam, Quad, on that case also we want to patch up, right? We want to make up instead of break up, to save the employment opportunity of lakhs of people of both the countries. So economic relation is glue that holds together all the members. But in case of SAARC, in their global trade, bilateral trade among the members of SAARC is 4 to 5%. In case of European Union, it is 67 to 69%. In case of NAFTA, 27%. ASEAN 29%. So they have the vital stake. Vital stake is attached with each other. So they don't want to break up the relation, right? But here we have negligible trade. And in case of India and Pakistan, it was $0.2 billion trade before 2016. And since 2016 onward, there is no trade relation between the two countries, right? Then this glue is absent. Glue is absent. So we don't have interest with each other. Otherwise, even initiative taken by the common people, like business community of both the countries, pressurize their respective government to promote trade, right? But here no business at all. This is the reason that we have a strained relation. Nobody is ready to mediate between the two countries. There is we don't have G to G relation, government to government relation, and we do not have even P to P relation, people to people relation between the two countries. Next point. It is one of the most imbalanced Indo-centric organization. Most imbalanced, write down in bracket, Indo-centric organization of the world, because %75 population, %77 GNP, and 75% territory of SAARC
belongs to India. Say this is most imbalanced organization. 75% population of SAARC is within India, and in this way we have a big market, right? 77% GNP of SAARC. If you combine GDP of three company of India, say Adani, Ambani and Tata, it is more than the whole GDP of Pakistan. It will be more than the whole GDP of Pakistan. Right. Only three company of India. So they are not in position to bargain with India. For your kind information, India and Bangladesh are one of the largest exporter of jute and jute product in the international market, you know. But India export jute items to Bangladesh. Bangladesh is exporter of raw jute and jute product in all over the world, but India is exporting the jute product to Bangladesh. How does this happen? Because due to sophisticated technology of India, if a carpet is manufactured in Bangladesh, say it costs 100 rupees, right? CP of the carpet is 100 rupees if it is manufactured in Bangladesh. And the same quality of carpet with sophisticated technology of India, we are in position to same quality, even superior quality of carpet, we export to Bangladesh in 75 rupees. Right. Then as a consumer, which carpet would you prefer, Indian carpet or Bangladeshi carpet? Indian carpet. And same case is applicable in case of India and China. Like Indian electronic market is dominated by China due to its superior technology. When this digital board is manufactured in China only, if you purchase indigenous digital board, then price of the board is much higher than the Chinese board. So as a consumer, I prefer to purchase this Chinese board, right? The same quality of Indian manufactured board is much costlier than the Chinese product. Due to superior technology, even in the toy market of India is dominated by China. Even the cycle market of India is dominated by China due to their superior technology. And India is dominating all the SAARC countries. And at the same time, they always fear that India can destabilize them. And that is true as well. Their fear is not unfounded. It is genuine, like say for an instance. In case of Sri Lanka, more than 80% population of Sri Lanka is follower Buddhism, right? Single is follower of Buddhism. They call their ancestors were North Indian Aryan, right? And 14% population of Sri Lanka is Tamil. They call their ancestors were South Indian Dravidian Hindus. 94% population. With the help of Tamil, we can easily destabilize Sri Lanka. Similarly, in case of Pakistan, we have good relation with Sindh, province of Pakistan. Substantial number of Hindu community is residing there.
With the help of this community, we can destabilize Pakistan. At the same time, in the Khyber Pakhtunkhwa region, Pathans are traditional supporter of India. Similarly, in Balochistan, right, Balochist people is supporter of India. If we give them active assistance, then we can easily balkanize Pakistan. In case of Nepal, 42% population of Nepal lives in the Tarai region, and all the people of Tarai region is of Indian origin. The people from UP and Bihar migrated there, and matrimonial relation between India and the people of Tarai region. Thousands of marriages solemnized annually in the region. That is another point. Right. We can destabilize Nepal as well. In case of Bangladesh, even today about 9% population of Hindu community in Bangladesh. They are a staunch supporter of India. With the help of them, we can easily destabilize Bangladesh. Right. So, all the countries of SAARC have apprehension, doubt, fear from India. Due to this reason, SAARC is considered as the most imbalanced organization, Indo-centric organization of the world. Clear? Next point. All the members of SAARC is economically and culturally linked with India. They fear that India may destabilize them. Consequently, they invite China to counter India. See, all the members of SAARC is economically and culturally linked with India. Culture, like India is the third largest Islamic country of this world. First one is Indonesia, second one is, and third one is India. We are the third largest Islamic country of this world. Right. In this sense, India and Pakistan is linked together because follower of Islam in both the sides. Even if we do not have good relation with Pakistan, on that case also matrimonial relation between the girls and guys of India and Pakistan. They solemnize marriage in Dubai. Girls and guys of India and Pakistan solemnize their marriage in Dubai, and then they go back to their respective countries. Similarly, in case of Sri Lanka, they are follower of Buddhism and Hinduism, and India is also follower of Buddhism and Hinduism. So in case of Bangladesh, besides Islamic link and Bengali language, people, even if people of Bangladesh is sitting among all of us, we cannot identify them because they look like us, right? They look like us. This is the first point. We are genetically same. They look like us, and they speak the same language, Bengali.
Bengali is spoken even in our West Bengal, certain part of Jharkhand, right? Even in certain part of Bihar as well, particularly Kishanganj area, the border area of West Bengal and Bihar. And we speak Bengali. And earlier there was one student from Bangladesh, my Didi, what is her name? Nisha. Where is she? Any one of you have contact with Didi? No. Then I used to call her Bangladeshi, right? I used to call her my one student in Hindi medium, previous batch student, Mansi. She is also born and brought up in Bengal only. I call her Bangladeshi, or sometime I call her Rohingya as well. Right? Any one of you know Mansi? Yes? And I call her Rohingya, Bangladeshi. We are culturally linked. Same is the case with Nepal. So all this region is India linked, right? And they have apprehension, doubt, fear from India. Therefore, they invite China to counter India. They are promoting China's string of pearl theory and fencing India theory. Right? Clear? Next point. India is the largest populated country largest UPI transaction second skilled manpower, third largest economy, radon in bracket PPP, fourth largest economy, radon in bracket real GDP, fourth military power, fifth technological power, sixth industrialized country, of the world, create fear in the mind of members. This India is an emerging superpower, right? And say proud to be an Indian, right? We are emerging superpower, right? Emerging superpower and proud to be an Indian. We are the largest populated country. We are having largest electronic transaction, right? Second largest skilled manpower, right? Skilled manpower. Third largest economy of the world on the basis of purchasing power parity. Fourth largest military power. Fourth largest economic power on the basis of real GDP by 2028-29.
we will be the 5 trillion economy, third largest economy of the world as well, even on the basis of real GDP, and fourth largest military power. Earlier we were importer of military equipments, arms and ammunition. Nowadays we are exporter as well. We are exporting different arms and ammunitions. Okay. And by 2031, India will be the largest producer of drones for various purposes, including the military drones. India will be the largest drone producing country of the world. Right. And one of the largest country who will keep the robotic military. Right. Robotic military, even nowadays we have manufactured robotic dog, and that dog is fighting in front of the soldiers. Right. We have already manufactured robotic dogs. So, at the same time, we have developed anti-satellite missile. Thereby, we can destroy satellite of any country and block the communication system. Right. Fifth largest technological power of the world. Just few days ago, there was 100th launch of the ISRO, and it is India which has record in all over the world that in one go we have launched 104 satellites in one go in different orbit. And we have record that in one go we have successfully sent Mars mission. Right. We have record that our experimental instrument landed on the south pole of the moon. Right. So we are technological power as well. Right. And in the AI field, most probably we will dominate AI field as well very soon due to our skill manpower. So, and in front of India, they feel inferiority. Right. They feel inferior. Right. They feel inferior in front of India. So they invite China to compete with India. Are you getting my point? Next point. There is mutual rivalry amongst members of SAARC in the international market because they are exporting similar products like India and Bangladesh are exporter of jute and jute product. India and Sri Lanka are exporter of tea, coffee, rubber and spices. India and Bangladesh are exporter of
sugar, wheat and rice. Sorry, India and Pakistan are exporter of sugar, wheat and rice. See, what did I dictate you? We are competing each other, right? In the international market, say for an instance, like India and Bangladesh are competitor of each other in the international market of export of raw jute and jute product. India and Sri Lanka are competitor of each other in the international market in tea, coffee, rubber, spices, etc. India and Pakistan are competitor of each other in wheat, rice, sugar, etc. Right? So we are competing. Our economy is not supplementary to each other, but our economy is rival to each other. That is another problem. Next point. Mutual rivalry and trust deficit. Between India and other members of SAARC. Next point. When SAARC failed to achieve its objective, India promoted sub-regional organizations like BIMSTEC, Growth Quadrangle, and BBIN corridors. Next members of the SAARC members of the SAARC supporting enemical country of each other. Like Pakistan and Bangladesh invite China as an observer of the SAARC, while India invites Japan, US and Iran as an observer during various conferences of the SAARC. Say, what did I dictate you? SAARC failed to achieve its objective. Consequently, India promoted sub-regional organization like BIMSTEC. India is promoting BIMSTEC. India is promoting BBIN corridor, Bangladesh, Bhutan, India and Nepal corridor.
This is also known as growth quadrangle. And growth quadrangle. Whenever SAARC summit held, if India is presiding over the SAARC summit, then India used to invite Japan, Iran, USA. Iran is pursuing anti-Pakistan policy, right? So India invites Iran, Japan, and USA. If the SAARC summit is hosted by, say, Pakistan, then Pakistan will invite China. Bangladesh will invite China as an observer to look after the issue, to look into the matter. See, then what type of success the organization will get, because you don't have faith on your own member. You are inviting observer inimical to the other members. Are you getting my point? Next point. Due to mutual rivalry between India and Pakistan, there was no SAARC summit in 1991, 1992, 1994, 1999, 2000, 2001, 2003, and 2016 onward. And 2016 onward. Next point. During the Kathmandu conference of SAARC, India proposed intra-SAARC electricity grid, road connectivity, and SAARC satellite. But the same was opposed by Pakistan. Consequently, India has made separate agreement with Bangladesh, Nepal, and Bhutan in 2015. Next point. Bilateral issues cannot be discussed
in SARC. But since the organization relies on the principle of unanimity for all major decisions, Pakistan has often vetoed the major initiatives proposed at SARC. For example, SARC Motor Vehicle Agreement, proposed at Kathmandu Summit, 2014. Next point. For India, Pakistan's use of terror as an instrument of foreign policy has made normal business impossible. Next point, dispute between Pakistan and Afghanistan over the Durand line, DURAND line, is also a region. Next point, India's economic position in comparison to other SARC countries create an impression of India being a big brother rather than a strategic partner. Next point, after the deadly terror attack on the Indian security forces
at Uri in 2016, comma, India refused to engage with the SARC. Comma, none has been held since then. None, N-O-N-E, has been held since then. Write down in paragraph. The SARC has become almost marginal to the region's collective consciousness. And other organizations such as the Bay of Bengal, Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, write down in bracket BIMSTEC, B capital, I capital, M capital, S capital, T capital, E capital, C capital. BIMSTEC. Earlier BIMSTEC was known as Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation. Now name of BIMSTEC is changed into Bay of Bengal for multi-sectoral technical and economic cooperation. Now name is changed. Give heading. Should India continue to neglect SARC over BIMSTEC? Should India continue to neglect SARC over BIMSTEC? Should India continue to neglect SARC over BIMSTEC? Question mark. Write down. Below that you will write the two organizations, write down in bracket SARC and BIMSTEC, focus on geographically overlapping regions, full stop. However, comma, this does not make them equal alternatives. Because of the following reasons.
REASON S. Following regions. Write on point 1. SAARC is a purely regional organization. Comma, whereas BIMSTEC is inter-regional and connect both South Asia and ASEAN. BIMSTEC provides SAARC countries a unique opportunity to connect with ASEAN. Connect with ASEAN. Say, SAARC is purely regional organization, right? Completely organization of South Asia only, right? But in case of BIMSTEC, like Myanmar and Thailand are member of ASEAN as well. So SAARC is intra-regional organization. BIMSTEC is inter-regional organization because it consists of two regions, South Asia and East Asia, right? South Asian countries and East Asian countries. So we will call it inter-regional organization. But in case of SAARC, it is purely intra-regional organization, right? Next point. Further, the scope of BIMSTEC has been undermined by China because Thailand and Myanmar are now more economically and strategically closer to China than India. Full stop. Apart from it, comma, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, and Bangladesh also have extensive economic engagement with China and are struggling to work out balancing strategies between India and China. Say, two powerful countries of ASEAN is Myanmar and Thailand.
They are also member of BIMSTEC. And Myanmar and Thailand are more closer to China in comparison to India. So China will never allow the BIMSTEC to get success. Right? SAARC is already failure organization. China will never allow BIMSTEC to get success because Pakistan is eliminated from the BIMSTEC. And at the same time, most of the South Asian countries, say, don't talk about Pakistan, say Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Maldives, they all are heavily indebted to China. China has huge investment there. So under this situation, they are struggling. They are struggling means the South Asian countries are struggling how to maintain equidistance between India and China, how to maintain cordial relations between India and China. They are struggling on this front. Next point. The revival of SAARC will also facilitate India's neighborhood first policy. In meeting the challenge of regional strategic encroachment by China through its Belt and Road Initiative. Say, as we know, SAARC is purely regional organization, and BIMSTEC is inter-regional organization. And if SAARC gets success, then India may pursue neighborhood first policy, right, of Narendra Modi, that we will give first priority to our neighbor, only then any other country. But in case of BIMSTEC, it is not possible for India to pursue neighborhood first policy because Thailand is not neighbor of India. Right. So, in case of success of SAARC, it will boost up Indian economy more than the BIMSTEC. So, success of SAARC is vital interest for India, but it is China, with help of Pakistan, thwarted all the efforts of India. Say, for an instance, like India proposed SAARC electricity connectivity, like Nepal is having spare electricity, surplus electricity. Bhutan is having surplus electricity. But in case of India, deficient electricity. Pakistan, deficient electricity. You know, only 30% population of Pakistan is having 24-hour electricity facility. Only 30%. India wanted through SAARC electricity grid, India will purchase surplus electricity from Nepal, Bhutan, Bangladesh, and export the same through India's transmission line to Pakistan. Then in this way, electricity problem of Pakistan
may be eliminated. Similarly, India wanted motor vehicle agreement, that trucks carrying goods, different type of items, may freely travel to all the SAARC countries. Like trucks of Pakistan should freely travel to India, Indian trucks to Pakistan, Indian trucks to Bangladesh, and Pakistani trucks to India under motor vehicle agreement. But Pakistan opposed the same. Similarly, India proposed SAARC satellite because Indian technology is superior nowadays. We are in position to forecast weather forecast accurately. We are forecasting the weather, but Pakistan refused, opposed the same, because on the ground that India may take portrait of different parts of Pakistan. India may engage in the espionage activity, a spy activity in Pakistan through the satellite. Right. So, what is intention of Pakistan? To oppose all the policy, all the initiative taken by India. Right. All the initiative taken by India. Say, for your kind information, that few years ago, people of Pakistan was appealed to pay 20 rupees each. सभी पाकिस्तानी 20 रुपीज देगा. क्यों देगा? कि एक डैम बनाया जाएगा, ठीक, जिससे कि पाकिस्तान के लोगों का वाटर स्कैरसिटी जो है ना, पानी की जो किल्लत है ना, उनको दूर किया जा सके. इस फॉर दैट पर्पस एवरी पाकिस्तानी विल पे 20 रुपीज, ठीक है, डैम बनाने के लिए. लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल ने क्या कहा कि पाकिस्तान विल मैन्युफैक्चर 100 एटम बॉम्ब. ठीक है ना, एक एटम बॉम्ब बनाने में लगभग 14,000 करोड़ रुपया खर्च होता है. ठीक, एक एटम बॉम्ब बनाने में कितना खर्च होता है? वो 100 एटम बॉम्ब बनाएगा और 20-20 रुपया जो है कि अपने लोगों को कहता है कि डैम बनाने के लिए. ठीक है, और ये 100 एटम बम बनाएगा इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए. ठीक है ना, इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो 100 एटम बम बनाएगा. ठीक है ना, उसके लिए उनके पास में पैसा है, और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए, पानी की सुविधा देने के लिए पैसा नहीं. सी द माइंडसेट. This is the mindset of people of Pakistan. It is not mindset of common people of Pakistan. It is mindset of the elite section of Pakistan. ये common people of Pakistan जो कि हमारे जैसे ही होता है पाकिस्तानी. ठीक है ना, their mindset is similar to people of India. जो elite section है ना, बड़ी बड़ी politician, business tycoon, शहजादा, शहजादी, राजा, नवाब. जब हम इंडिया आजाद हुई ना, तो राजा, महाराजा, जमींदारी सिस्टम एक्सेट्रा एबॉलिश्ड, उनको खत्म कर दिया गया. हमारे यहाँ और पाकिस्तान में क्या फर्क है? हम सभी इक्वल हैं. हमारे यहाँ कोई राजा, महाराजा, नवाब, शहजादा, शहजादी नहीं है. हमारे यहाँ का नवाब कौन है? आम लोग. 1 पीपल 1 वोट. कल ये दिल्ली का नवाब कौन बनेगा? 8 तारीख को डिसाइड हो जाएगा. वो डिसाइड कौन करेगा? जनता. कल जो है जनता करेगी. मैं भी जाऊंगा कल, देखना, मैं अपना फिंगर दिखाऊंगा तुम लोगों को कि मैं वोट डाल करके आया. दिल्ली का नवाब कौन बनेगा? कौन डिसाइड करेगी? दिल्ली की जनता. ठीक है ना. इंडिया का नवाब कौन बनेगा?
कौन डिसाइड करेगी? इंडिया की जनता। पाकिस्तान का नवाब कौन बनेगा? वो डिसाइड करेगा पाकिस्तान की मिलिट्री, जनता नहीं। वहां आम लोगों में बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए वहां पर कभी डेमोक्रेसी, कभी मिलिट्री रूल, कभी डेमोक्रेसी, कभी मिलिट्री रूल। क्योंकि वहां के इलीट सेक्शन जो है ना, बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है ना, जमींदार, राजा, महाराजा, अमीर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, दे डोंट वांट डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी नहीं चाहता। अगर डेमोक्रेसी हो जाए ना पाकिस्तान में, तो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन तुरंत जो है कि ठीक हो जाएगा। क्योंकि वहां के कॉमन लोग जो हमारे जैसे ही हैं। हमारे घर में जो होता है, जो हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, कस्टम है, वैल्यू है, एवरीथिंग इज प्रिवेलिंग देयर। हमारे जैसे ही लोग हैं। लेकिन अगर डेमोक्रेसी हो जाएगा तो ये राजा, महाराजा, नवाब, प्रिंस, प्रिंसेस, जमींदार, ये सब का रुतबा कहाँ जाएगा? वो तो खत्म हो जाएगा ना, उनका रुतबा तो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहता है ऐसा। और हमारे यहाँ गांव का प्रधान कौन होगा, मुखिया कौन होगा, सरपंच कौन होगा, डिसाइडेड बाय बैलेट बॉक्स, चुनाव से डिसाइड होगा। ब्लॉक का मेंबर कौन होगा, पंचायत समिति का मेंबर कौन होगा, जिला परिषद का मेंबर कौन होगा, किससे डिसाइड किया जाता है? बैलेट बॉक्स से, चुनाव के द्वारा, नॉट बाय बुलेट। गन से डिसाइड नहीं होता, मिलिट्री डिसाइड नहीं करती है। हमारे यहाँ मिलिट्री का कोई रोल है? हमारे यहाँ आम जनता की रोल है। अभी देखो दिल्ली में कल चुनाव है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी प्रचार तो करता ही है, चले जाओ झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ, तुम लोग भी बैठ जाना, 1-2 बोतल मिल जाएगा फ्री में, 500-1000 रुपया भी मिल जाएगा, ठीक है, साड़ी भी मिल सकता है, सलवार सूट भी मिल सकता है, ठीक है ना, तुम लोग भी चले जाओ, तुम लोगों को भी मिल जाएगा। और यहाँ पर तो कुछ चिकन बांट रहा था, वहां पर पकड़ाया है, बीजेपी वाले सुनते हैं पकड़ाया है, और आम आदमी वाला है, आम आदमी पार्टी का, ठीक है ना, वो चिकन बांट रहा था, ठीक है ना। तो जाना है तो चले जाओ, चिकन भी मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जनता को किसी ना किसी तरह से खुश करो, ये गलत है, लेकिन जनता सब कुछ है, ठीक है ना। जानते हो गरीब, ये अमीर तबका के लोग कभी भी जो आम आदमी पार्टी को वोटिंग नहीं करता, कभी नहीं करता वोट, अमीर तबका के लोग जो है। और मेजोरिटी किनका है? गरीबों का है। इसलिए अरविंद केजरीवाल 10 साल से ज्यादा से चीफ मिनिस्टर बना हुआ, ठीक है, कि उनको 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, 20,000 ये लीटर वाटर फ्री, बात खत्म। पानी फ्री, वाटर फ्री, डीटीसी बस फ्री लेडीज के लिए। इस बार तो 2100 रुपीज भी फ्री होगा, ठीक है ना। अब जो उनके काट के लिए बीजेपी ने क्या कर दिया, 200, अब नहीं तो वही जीत जाएगा। अब बीजेपी कोई संत महात्मा तो है नहीं, कांग्रेस भी कोई संत महात्मा तो है नहीं। बीजेपी ने कहा कि हम तो 2500 रुपया देंगे, ठीक है ना, 2500 रुपया देंगे, 10 लाख रुपया तक का इंश्योरेंस फ्री करेंगे गरीबों के लिए, 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब तो जनता फिर परेशान, क्या 2100 या 2500, और 500 रुपीज में ये एलपीजी कनेक्शन देंगे। होली और दीपावली में फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा, ठीक है। हमें कोई काम करने की जरूरी है? बताओ, 2500 रुपया महीना मिलेगा, एलपीजी जो है कि 500 रुपीज में मिलेगा, और मनरेगा के तहत
100 दिन काम भी मिल जाएगा और फ्री में मुफ्त का राशन भी तो मिल जाए ना। मुफ्त का राशन मिल गया, मुफ्त का इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, मुफ्त का गैस सिलेंडर मिल गया, ठीक है ना। मुफ्त का गैस सिलेंडर भी मिल गया ना, मुफ्त का बस में ट्रेवलिंग भी मिल गया, ठीक है ना। मेट्रो भी जाते होंगे ना। चलो किन के, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी। चलो तो बीजेपी भी तब करेगी, ठीक है ना। नहीं, बीजेपी नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने किया। अब बताओ आम आदमी पार्टी के बस में है वो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है, बीजेपी ने कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट में अगर, क्योंकि वो होगा नहीं है, और केजरीवाल क्या बोलेंगे कि बीजेपी ने होने नहीं दिया ऐसा। शेयर पॉलिटिक्स। आम जनता को क्या पता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है या स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत योजना है जो 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस देता है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लगने नहीं दिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो यहां पर प्रॉब्लम। अब मेट्रो में 50% फ्री, 50% फ्री क्यों नहीं हुआ? इनके पीछे कारण है। एक कौन कहता था, ये बिस्मार्क कहते थे कि पॉलिटिक्स क्या होता है, सॉरी विंस्टन चर्चिल कहते थे, व्हाट इज पॉलिटिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रिडिक्ट अबाउट समथिंग and if that doesn't happen then prove why did not happen. पॉलिटिक्स क्या है कि पहले प्रिडिक्ट कर दो लोगों को, ऐसा 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 होगा, मैंने भविष्यवाणी कर दिया, वैसा ही होगा, ठीक है, जैसा मैंने भविष्यवाणी कर दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रूफ कर दो कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ, मैं तो सही था, ये कारण आगे इसलिए नहीं हुआ। दिस इज पॉलिटिक्स। अब जो कि ना तो 2500 रुपया महीना मिलने वाला है, ध्यान में देख देना, ना 2100 रुपया मिलने वाला है, चाहे आम आदमी की सरकार आए चाहे बीजेपी की सरकार आए, दोनों में से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर ये कितना 76 या 78,000 करोड़ का दिल्ली का टोटल बजट ही है, अगर 2100 रुपया जो है अगर देती है सरकार आम लोगों को, तो लगभग 32% जो है कि इसी में चले जाएगा। तो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट क्या होगा? सैलरी कहां से दिया जाएगा? रोड कहां से बनेगी? ठीक है ना। पंजाब में भी तो अनाउंस किया था देंगे, नहीं दिए, प्रैक्टिकली है नहीं। तो जनता को उल्लू बनाने की तरीका, ठीक है, ये उल्लू बनाने की तरीका और कुछ नहीं। बीजेपी तो ये भी तुम लोगों के लिए अनाउंस किया यार, 5 रुपये में खाने का अरेंजमेंट है ना, अटल कैंटीन, ठीक है ना, अटल कैंटीन का भी जो है अनाउंसमेंट किया, ठीक है। वो 5 रुपीज में अभी तुम लोग जो है कि कौन भोज में खाते हो, हरी भोज की कौन भोज है, हरी भोज में वहां पर तुम लोगों को कितना 10 रुपया मिलता है। अब उसमें भी हरी भोज तो एक टाइम ही है, तुम्हीं लोगों में से कोई बताया था एक टाइम है कि दोनों टाइम है? बैड लक, बैड लक, ठीक है। ये तो दोनों टाइम होगा, 5-5 रुपया, बहुत अच्छा है। 10 रुपये में खाना मिल गया तुम लोग, ठीक है ना। और अगर यहाँ दिल्ली के हो, लड़की हो, तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन करवा लेना, 2500 रुपया भी मिल जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा लेना। और यहाँ का जो है कि आई कार्ड, यहाँ का आधार कार्ड बनवा लेना, इलेक्शन का कार्ड बनवा लेना, और जब यहाँ से जाओगे तो हटा देना, यानी कि इलेक्शन का कार्ड तो बनता ही, आधार कार्ड तो बनता है। जो एज एन इंडियन सिटीजन आप कहीं का जो आधार कार्ड बना सकते हैं, कहीं का इलेक्शन कार्ड बना सकते हैं, एप्लीकेशन दे दो, जैसे कि मैं
मेरा सब कुछ जो है कि आधार, इलेक्शन आई कार्ड, सब कुछ जो है कि दिल्ली का है, बिहार में कैंसिल हो गया, कैंसिल करवा दिया एप्लीकेशन डालकर। फिर अगर मान लो कि यहाँ से छोड़ेंगे तो बिहार में कर, यहाँ का कैंसिल करवा करके बिहार का बना ले। ठीक है, तो देखो कितना कितना अच्छा जो है कि तुम लोगों को मैं पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है ना, 10 रुपये में खाना, 2500 रुपये हो गया, पॉकेट खर्च हो गया। और अगर जो है इधर वजीराबाद एरिया तरफ चले जाओगे तो 2500 रुपये में रूम भी मिल जाएगा। ठीक है ना, वो 4000 रुपये में एक अच्छा रूम मिल जाएगा, डबल रह जाना, शेयरिंग, 500 रुपये पॉकेट खर्च बच गया, आना बस तो फ्री है ही। ठीक है ना, और उन्होंने ये कहा कि केवल ऑनर को नहीं, किराएदार का भी इलेक्ट्रिसिटी में छूट होगी। ये भी अनाउंसमेंट जो किराए पर रहा था, अब देखो फ्री में रहना खाना हो गया, कितना अच्छा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, लेकिन ये कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये सारी बात क्यों कहा कि देखो कि हमारे यहाँ डिफरेंट तरीका से जनता को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। हमारा डेमोक्रेसी जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है उसमें इंडिया भी एक है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। अगर वहां पर डेमोक्रेसी हो जाए ना तो दोनों के बीच में जितने भी टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि पाकिस्तान जो है कि अभी तक इंडिया के साथ मिल भी गया रहता अगर डेमोक्रेसी हो जाए। तो ये जो एलिट सेक्शन है ना, वहां पर बड़े बड़े सेक्शन जो है ना, वो ऐसा नहीं होने देता है और इंडिया के प्रति नफरत फैलाता है। ठीक है, इंडिया के प्रति नफरत फैलाता है। क्यों फैलाता है? उनका एग्जिस्टेंस ही वैसा ही है। इंडिया में भी देखोगे ना, जो बड़े बड़े नेताजी लोग हैं, फारूक अब्दुल्ला ले लो, उमर अब्दुल्ला ले लो, लालू यादव ले लो, मुलायम सिंह यादव ले लो। फारूक अब्दुल्ला उर्दू के बहुत बड़े समर्थक है, उर्दू एडुकेशन के, लेकिन उनका बेटा बेटी इंडिया में भी नहीं पढ़ा, फॉरेन में पढ़ा, तो उनको क्यों नहीं उर्दू एडुकेशन दी? लालू यादव जो उर्दू एडुकेशन के बहुत बड़े समर्थक हैं, वो कहते हैं कि मैं माई का बेटा हूं, M फॉर मुस्लिम, Y फॉर यादव। लेकिन उनका बेटा बेटी कोई हिंदी मीडियम के स्कूल में भी नहीं पढ़ा, ना उर्दू में पढ़ा। लेकिन आम लोगों को क्या कहता है कि तुम वही पढ़ो, तुम पढ़ो लिखो नहीं, जाहिल बने रहो, जिससे कि 500-500 रुपये में और दारू पिला करके तुमसे वोट ले ले। ये सब नेता का काम है। अदरवाइज गो एंड मीट विद पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे जैसे ही हैं। ठीक है, बिल्कुल हमारे जैसे मान सम्मान रिस्पेक्ट जो है कि तुम्हें मिलेगा। लेकिन वो जो एलीट सेक्शन है ना, वो ऐसा करता है। Right, now come to the point. Next point. What I have dictated you? Please read the last paragraph. The revival of SARC will also facilitate the first policy in the China freedom strategic enforcement by China. Next point. Thus, in so far as their regions of interest overlap, regions REGIONS of interest overlap, SARC and BIMSTEC
complement each other in terms of functions and goals. The success of BIMSTEC does not render SARC pointless. It only adds a new chapter in regional cooperation in South Asia. Regional cooperation in South Asia. Give heading comparison between SARC and BIMSTEC. Give heading comparison between SARC and BIMSTEC. Give heading SARC. Point 1. A regional organization looking into integrating South Asia. Next point. Established in 1985, a product of the Cold War era. Next point. Member countries suffer from mistrust and suspicion. Next point. Suffers from regional politics. Asymmetric power balance. ASYMMETRIC power balance. Some asymmetric means somewhere democracy, somewhere dictatorship, somewhere monarchy, right? Next point. Intra-regional trade only 4 to 5%. Give heading BIMSTEC. Inter-regional organization connecting South Asia and Southeast Asia. Next point. Established in 1997, in the post-Cold War. Next point. Members maintain reasonably
friendly relations, next, member countries share strategic trust among each other. Next point, balancing of power with the presence of Thailand and India on the bloc. Next point, intra-regional trade has increased by around 6% in a decade. 6% in a decade. Please go through the points whatever I have dictated you, and in case of problem please ask me. Please ask me. Please ask me question. सर ये जो 7 ईयर ऑफ सेंटर जो सब डिसाइड किया करते हैं वो साथ ही समिट के थ्रू होता है। तो 1991 में पहले ही समिट में डिसाइड कर लिया गया होगा, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म का रोड मैप पहले बना लिया जाता है, ठीक है। इम्प्लीमेंट हो या नो दैट इज अनदर थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, question please. Question please. सर आपको रिवाइज करने के लिए क्या स्टेप्स है? जो फेल्योर का कारण है जस्ट उनके रिवर्स कर दो, राइट। जो फेल्योर का रीजन है उसी को रिवर्स कर दोगे तो रिवाइव हो जाएगा, राइट। हो गया ना सॉल्यूशन कि नहीं हुआ? इसलिए तो प्रॉब्लम, इसलिए we call it the most
failure organization of the world. And we hope for the best. Good sense will prevail. One day we will sort out the problem. Even we will establish cordial relation with Pakistan as well. Right. सर 2016 से साथ सबमिट नहीं होने हैं तो फंड रेजिंग वैसे ही चल रही है? क्या फंड जैसे प्रोवाइड करे जाते थे साथ को वैसे ही हो रहे हैं या फिर स्टॉप हो चुका है? वो जो स्टॉप हो चुका है, इंडिया किनको BBIN कॉरिडोर को, ग्रोथ क्वाड्रेंगल को प्रमोट कर रहा है और सभी मेंबर पाकिस्तान को छोड़ करके सारे को किस में ले आया, बिम्स्टेक में ले आया। तो काम तो एज यूजुअल चल ही रहा है, केवल पाकिस्तान को इंडिया ने आइसोलेट कर दिया। मतलब साल के नेम की और अभी कुछ नहीं है, ठीक है, अभी कुछ नहीं। सब कुछ जो है कि ऑर्गेनाइजेशन चल रही है फॉर नेम सेक ओनली। जो पहले के हैं वही जो है कि है, या अभी काम जो है कि हॉल्ट कर दिया गया। अब तुम्हारी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगर सेक्रेटरी है तो उनका फंडिंग क्या होगा, सैलरी कौन पे कर रहा होगा, तो उनको फॉर द टाइम भी हॉल्ट कर दो, रोक दो फंक्शन को। क्लियर? जैसे कि अमेरिका ने एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 600 मेंबर्स था, इंटरनेशनल फंडिंग करता था, कोऑपरेट करता था, उनको सस्पेंड कर दिया, उनके 600 मेंबर को। ठीक है, तो काम जो है कि उनका क्या हो जाएगा, हॉल्ट हो गया। दैट्स ऑल, नाउ यू आर नॉट सपोज्ड टू पे। ठीक, नेक्स्ट। ऑफिशियली इनको जो है कि रिवाइव हम करने के बारे में क्यों नहीं सोचे, क्यों नहीं हो पाएगा? पाकिस्तान से हमारा रिलेशन इम्प्रूव होगा। बांग्लादेश में शेख हसीना थी तो बहुत अच्छा रिलेशन था, अभी मोहम्मद यूनुस है तो रिलेशन हमारा जो है कि खराब हो गया है। BNP आएगा तो रिलेशन खराब हो जाएगा। अगर इलेक्शन भी होने वाला है वहां पर, श्रीलंका के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, तो ऑब्स्टेकल अफगानिस्तान के साथ में भी देखना हमारा रिलेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? अब रह गया पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है कि मेन ऑब्स्टेकल है। पाकिस्तान के साथ में भी हमारा हमेशा गंदा रिलेशन नहीं रहा है जब बेनजीर भुट्टो थी। ठीक है ना? तो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान के, तो बहुत अच्छा रिलेशन था हमारा। ठीक है ना? नवाज शरीफ के टाइम में भी अच्छा रिलेशन था, जब अटल बिहारी वाजपेयी बस से बाघा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान गए थे। लेकिन होता क्या है कि जब मैंने तुम्हें बताया कि हमारी यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारी यहाँ जनता जनार्दन है, आम लोग जो है कि भगवान है। पाकिस्तान में आम लोग अभी भगवान नहीं बना है, क्योंकि वहां अभी भी जमींदारी सिस्टम है, अभी भी मुल्ला मौलवियों का राज चलता है, आर्मी का राज चलता है, राजा रानी शहजादा शहजादी है, ये सब डोमिनेंट सेक्शन है। और ये सेक्शन हमारी जैसे कॉमन लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं देगा। या इवन ले लो ना, अपने गांव शहर मोहल्ला को ले लो, जो बड़े बड़े लोग होता है ना, वो दूसरे को उभरने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता, जल्दी देता। तो वहां पर जो कि पूरे पाकिस्तान में उसी का सुपरमेसी है। फिर जो कि इमरान खान जैसे लीडर आ जाए, ठीक है, इंडिया के साथ इमरान खान का भी अच्छा रिलेशन नहीं था, लेकिन वह मिलिट्री का जब तक वो रहा, मिलिट्री का चलने नहीं दिया। ठीक है ना? इसलिए मिलिट्री ने उनको क्या कर दिया, मिलिट्री के बल पर आया और मिलिट्री को ही वह साइड लाइन करने लगा, तो इमरान खान को साइड लाइन कर दिया गया। इमरान खान जैसे लीडर आए, बहुत अच्छे लीडर थे, जबकि वो एंटी इंडिया पॉलिसी परसू करता था। तो डेफिनेटली एज एन इंडियन मुझे इमरान खान अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो पाकिस्तान की मिलिट्री को संट किया था, मिलिट्री के बल पर ही आया था। उनको जो है क्या किया कि आप बॉर्डर तक ही सीमित रहिए, पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं कीजिए। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा ट्रिपल A पर बेस्ड रहा। A फॉर अमेरिका, A फॉर अल्लाह, अल्लाह मीन्स
मुल्ला मौलवी, ये सब। ए फॉर आर्मी, ट्रिपल ए पर रहा है वहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ मुल्ला मौलवी पंडित शंकराचार्य ये सब का पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे यहाँ मिलिट्री का पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वहां पर ये तबका जो है ना, उनका पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो हमें बराबरी का दर्जा कैसे देगा वो? बड़े बड़े लोग जो एक आम लोगों को बराबरी का दर्जा देता है। हमारे यहाँ तो कहो कि खुशकिस्मती से जमींदारी सिस्टम खत्म, ठीक है ना, राजशाही सिस्टम खत्म, ठीक है ना, राजा रानी का कॉन्सेप्ट खत्म, जमींदार का कॉन्सेप्ट खत्म। उनके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी सेटअप हुई। उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लागू किया। अब जो है कि गांव में मुखिया कौन होगा? जिनको जनता चाहेगी। सरपंच कौन होगा? जिनको जनता चाहेगी। एमएलए कौन होगा? जिनको जनता चाहेगी। एमपी कौन होगा? जिनको जनता चाहेगी। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसा सोचो कि वहां डेमोक्रेसी आ जाए, दोस्ती हो जाए हमारे बीच, वहां पर बेनजीर भुट्टो जैसे नेता आ जाए, नवाज शरीफ जैसे नेता आए, या इमरान खान जैसे ही आ जाए, वहां डेमोक्रेसी आ जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। अदरवाइज बेसिकली हम लोग एक ही है, ठीक है। ये बड़े बड़े लोग कहीं पर भी होता है, वो हमारी जैसे छोटे छोटे लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं देता। जैसे कि देखो, तुम लोग कल के डीएम एसपी हो, बड़े बड़े लोग हो, मैं एक सिंपल टीचर, मुझे बराबरी का दर्जा दोगे? तुम लोग नहीं दोगे। मैं खड़ा हूं, तुम लोग बैठे हुए, बराबरी का दर्जा तो दे नहीं रहे। सही बोल रहा हूं? देखो कि तुम बैठे हुए हो, तो सही बोल रहा हूं? रे बिल्कुल सही रेहान बोल रहा है कि जो मैं बैठा हुआ हूं, आप खड़े हैं, तो बराबरी का दर्जा तो आप लोग देंगे नहीं मुझे, ठीक है। चलिए कंक्लूजन लिख लीजिए। इवन दो सार्क इज बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल, and due to trust deficit, comma, mutual rivalry, and uncooperative attitude of Pakistan have made it a failed organization. If these problems are overcome, then problem of poverty and unemployment will be eliminated from the region. Now let's start another organization. Give heading ASEAN. And one homework for you all, exact question of last 10 years related to SARC only, right? I want to see last 10 years question of SARC, and I'm quite sure that you will be in position to answer more than 90% questions related to SARC, right? Tomorrow you will copy last 10 years question related to SARC. Clear?
This is your homework, and I am quite sure you will be in position to answer most of the question. Right? Till then, good night and goodbye.